Hey, hello and welcome to our yet another video, and in this video we are going to solve our Han University Examination Board Class 10th Model Paper of 2023, and we have got the Maths Paper 1 of Class 10. So here we have the sub formula that we will be needed to solve this paper, and let's see the first question of this model paper 2023. The cumulative frequency of the class preceding the median class. So let's find out the median class first. So what is median class? So to find median class, sum of f should be divided by 2. So अगर हम sum of summation frequency को उससे divide करें, so sum of f is equal to 70 and 70 divided by 2 will be equals to 35. तो यहाँ हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका देख लेते हैं. फर्स्ट क्यूमुलेटिव विल रिमेन सेम एज फ्रीक्वेंसी, देन नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड कर देंगे, तो वी विल गेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो देयर वी गॉट 23, देन नेक्स्ट क्लास के अंदर 24 ऐड कर देंगे, वी गेट 47. Then next class में हम 13 ऐड कर देते हैं, तो it will become 60 and the last cumulative frequency will be 70. So sum of f divided by 2 median class की median class निकालने के लिए हमारे पास frequency आ रही है 35. तो 35 हम search करेंगे in the column of cumulative frequency. So this is less than 35, this is less than 35 and this is greater than 35. So this means that this is our median class. ये हमारे पास median class हो गई. हमें cumulative frequency निकालनी है preceding the median class. So the correct answer will be 23. Median class से पहली class की cumulative frequency is 23. So in this way, our correct answer would be option B. Now let's see question number 2. In question number 2, we have 5 observations, and this means we have n is equals to 5. And in n5, the summation x is 9 and summation x square is 19. हमें मालूम करनी है वेरिएंस. सो हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला जो कि फर्स्ट पेज पर मौजूद था, उस फॉर्मूले को यूज करके वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं. Okay, so here we have the formula for variance summation x square, and this question is 19. So यहाँ हम 19 substitute कर देते हैं, divided by 5. So minus summation x over n whole square. This means 9 over 5 and whole square. तो इसको simply calculate करते हैं. 19 will be divided by 5 minus 9 over 5 whole square. इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.560. 0.560 is the variance of this data, so we can mark option A as the right answer. Now let's see question number 3. The given pie chart shows the number of students together with the name of their favorite fruits. So grapes, 25 students, apple 45, mango 60, orange 40 and banana 60. What is the percentage of the students whose favorite fruit is orange? तो हमें percentage मालूम करनी है for orange. तो ऑरेंज की परसेंटेज मालूम करने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट लाइक ऑरेंज डिवाइड कर देंगे इसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आप निकालना चाहें तो 25 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 50. So in this way we have got total of 220 students. So एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं. 40 will be divided by 20 and the result will be multiplied by 100.
So the answer will be 18.18%. This can be round off to 18.2%. So the our correct answer will be option B. Now let's see question number 4. The given data is in ascending order represent the age of people who visited a shop in a day. तो यहाँ हमारे पास डेटा मौजूद है जिसमें एक पर्टिकुलर शॉप के ऊपर जो पर्सन ने विजिट किया उन पर्सन की एजेस यहाँ पर मौजूद है. द मोड ऑफ द डेटा विल बी. सो अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो ऑलरेडी ऑर्डर के अंदर अरेंज है. यहाँ हमारे पास 9 2 दफ़ा आ रहा है, 42 2 टाइम्स आ रहा है, 35 is 3 टाइम्स एंड फर्दर किसी नंबर में रिपीटेशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर दैट पी. सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, बट 35 इज मोर as compared to P. 35 3 times आ रहा है डेटा में and P is only for 2 times. इसका मतलब है कि जो मोड होगा हमारा वो होगा 35 because it occurs 3 times in our data. So option B will be the right answer. Question number 5. Y over x is equal to a over 2. We have to find the value of y bar. X and Y किसी भी दो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड X bar and Y bar represents the mean of data X and data Y. So we know that if X over Y is equal to A over 2, so X bar over Y bar will be equals to A over 2. बिकॉज ए जो है वो कॉन्स्टेंट नंबर है. सो कॉन्स्टेंट नंबर के ऊपर जो है वो एवरेज लेने से, सिंगल टर्म की एवरेज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देन क्वेश्चन स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज ए ओवर 2. एक्स बार की जगह हम ए ओवर 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ए ओवर 2 डिवाइडेड बाय वाई बार इज इक्वल टू ए ओवर 2. से वहाँ ले जाते हैं, इसे यहाँ ला के डिवाइड कर देते हैं. तो फाइनली a over 2 divided by a over 2 will be equals to y bar. कैंसिल कर देंगे, we will get 1. So the option A will be the right answer. If 1 over a square multiplied by variance is equal to b. So variance multiplied by 1 over a square is equal to b. So अगर हम वेरिएंस मालूम करें तो वेरिएंस विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी. ए स्क्वायर को हमने दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया. देन सवाल में हमें कहा गया वी हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. सो वी विल गेट ए स्क्वायर रूट बी. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. Now we have question number 7. The square root of x plus 4, x minus 4 into x square minus 16. तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं इसका. x minus 4 और x plus 4 को हम एज इट इज रहने देते हैं एंड x square minus 16 को ब्रेक कर देते हैं into x plus 4 and x minus 4. So as we can see स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन टर्म्स आ रही है. दैट मीन्स कि स्क्वायर लगने के बाद वो रूट से बाहर आ जाएगी x plus 4 एंड x minus 4. इन दोनों टर्म्स के पेयर बन रहे हैं. स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ये दोनों फैक्टर्स. तो फाइनली x square minus 16 विल बी द राइट आंसर. दैट इज इन आवर ऑप्शन सी. The least common multiple of x4 minus a4, x square minus a square and x square plus a square. So LCM कैलकुलेट करना है हमें, तो हम इन तीनों फैक्टर्स के, तीनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स फॉर्म कर लेते हैं. So x4 minus a4 will be equals to x2 plus a2 and x plus a, x minus a. सिमिलरली सेकेंड एक्सप्रेशन के अगर हम फैक्टर्स को फॉर्म करें तो वी विल गेट x प्लस a एंड x माइनस a. एंड थर्ड एक्सप्रेशन की जो फैक्टर्स होंगे इट विल बी
x square plus a square as it is. तो LCM अगर हम फाइंड आउट करेंगे, LCM इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर अगर देखा जाए तीनों एक्सप्रेशंस के अंदर तो हमारे पास सिर्फ 1 है, तो कॉमन फैक्टर तो इन तीनों में हमारे पास आ जाएगा 1। फिर अगर हम अनकॉमन फैक्टर देखते हैं तो अनकॉमन फैक्टर में इन दोनों में सेम फैक्टर आ रहा है x प्लस ए एक्स माइनस ए, ये दोनों ब्रैकेट्स आ जाएंगे फॉर ओनली 1 टाइम्स। एक ही बार हमारे पास ये कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये तीनों में नहीं आ रहा बट वो एक्सप्रेशन में आ रहा है, तो इसे भी हम 1 टाइम ले लेंगे एज अ कॉमन फैक्टर। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस ए। तो ये तीनों एक्सप्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल हो जाएगा x4 माइनस a4। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। Now let's come to question number 9. The highest common factor of y minus 1 whole square, y plus 1 whole square and y square minus 1. तो इसके अगर हम फैक्टर फॉर्म करते हैं तो we will get y minus 1 and y minus 1. Similarly इसके फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे y plus 1 and y plus 1. Similarly y square minus 1 के कॉमन फैक्टर आ जाएंगे y plus 1 and y minus 1. So in this way we can see तीनों expressions के अंदर common factor कोई भी नहीं है. That means कि 1 is the common factor. So HCF of this expression will be 1, option A. Now let's simplify this expression. 1 minus 1 over x divided by 1 over x. So bracket के अंदर first of all we can take LCM. So we will get x minus 1 over x and multiplied by x. तो division को हमने multiply कर दिया और LCM लिया है bracket के अंदर. These x will be cancelled out. So we will get x minus 1 as our final answer. Option B is the right answer. Then we have expression जिसे हमें partial fraction के अंदर break करना है, and as we can see यहाँ हमारे पास linear factors हैं but the factors are repeated. So repeated factors के लिए expression कुछ इस तरह से हो जाती है partial fraction 5x plus 6 over x plus 1 and x minus 1 whole square. तो हम इन तीनों factors को break करते जाएंगे one by one. So it will be a over x plus 1 plus b over x minus 1 and c over x minus 1 whole square. So in this way, let's see the answer. The x minus 1 will be repeated for the 2 times. So option D will be the right answer. Let's simplify another expression. 1 over 1 minus x multiplied by x minus 1 over 2. Division को हमने change कर दिया है to multiplication and furthermore we can take minus 1 common from this expression. Denominator से minus 1 common ले रहे हैं. We will get x minus 1 into x minus 1 over 2. इन फैक्टर्स को कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया था. सो फाइनली वी गेट माइनस 1 over 2 एज द राइट आंसर. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें हमें वंस अगेन सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन आई एम टेकिंग एलसीएम ऑफ दीज टू टर्म्स. एलसीएम हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी. न्यूमरेटर फर्स्ट टर्म का फॉर्म हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वी कैन कीप दिस एज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर. देन ए प्लस बी हम कॉमन ले लेते हैं फ्रॉम बोथ द टर्म्स इन द न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 2a माइनस 2b माइनस a plus b whole square divided by a minus b and a plus b. Okay, so let's make it more simple.
ए प्लस बी होल स्क्वायर और दिस ए प्लस बी इसे आप यहीं पे कैंसल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा 2 माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी. नाउ वी कैन टेक एलसीएम एज ए माइनस बी और न्यूमरेटर हमारे पास हो जाता है कुछ इस तरह से, दैट 2a माइनस 2b माइनस ए माइनस बी. तो हमने ए माइनस बी को 2 से मल्टीप्लाई किया है, देन इस नेगेटिव साइड को इस ए प्लस बी से भी मल्टीप्लाई किया है. सो 2a माइनस ए विल बिकम a एंड 2 minus 2b minus b will become minus 3b divided by a minus b. So in this way, option D seems to be our right answer. Then we have an equation, linear equation, जिसे हमें solve करना है to find the value of x. So 3 is equals to minus 3x over 2. 3 and 3 will be cancelled out, so minus x will be equals to 2, or we can say x is equal to minus 2. So the right answer is option A. Next question. In this next question, we have the inequality 7x minus x greater than minus 7. So let's solve this. Minus 7x minus 7 is greater than minus 7. Minus 7 को shift करते हैं on the other side of inequality. So 7x will be greater than 0 and x is greater than 0. So finally the answer of this question is x greater than 0. The solution set of 1 minus x will be equals to. So let's solve this modulus equation. 1 minus x is equal to 0. Solve करते हैं by opening the modulus. So 1 minus x will be equals to 0. So x will be equals to 1. So the right answer is option A. The solution set of this quadratic equation. So x minus 1 over 4 is equal to 1 over 2. We have got the square root here. Squaring कर देते हैं both side पर. By squaring, taking square on both sides, we get x minus 1 over 4 is equal to 1 over 4. हमने both side पे squaring कर दी, so 1 over 4 square, 1 over 2 square will be equals to 1 over 4. So x will be equals to 1 over 4 plus 1 over 4 equals to 2 over 4 and 1 over 2. So the value of x is 1 over 2. So the right answer is option B. Then we have question number 18. Which of the following inequality will satisfy that x is less than 1 and greater than minus 1? So first option को हम simplify करते हैं. First option को simplify करेंगे तो 8x will be less than 8 and 8x will be greater than minus 8. So 8 को वहाँ ले जाके divide करेंगे, we get x is less than 1 and 8 को यहाँ भी divide करेंगे, we will get x is greater than minus 1. So simply the option A of this question is the right answer. क्वेश्चन नंबर 19 में वैल्यू ऑफ x मालूम करनी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 1 plus 1. So x will be equals to 2 and taking square on both sides we will get the value of x as 4. Option D is the right answer. Let's see question number 20. For the given equation x minus 3y equals 9 and x minus plus 3y equals to 15. We have to find the value of x. x मालूम करने के लिए दोनों equations को हम add कर देते हैं. x minus 3y is 9 and x plus 3y is equal to 15. By adding these two equations we get 2x is equal to 24. So the value of x will be 12. So option C will be the right answer.
Next, we have to find the point coordinates of the point S. So here we have got the x, a point S. So ये हमारे पास abscissa हो जाएगा. This will be the ordinate. So value of x is -3, 4. So let's see the options. -3, 4 is in option A. One of the points that lie on this given line will be, so we have got the 4 points 3, 2. So 3, 2 will be the point here, okay, line पे नहीं आ रहा. 4, 4 will be the point here, okay, again line पे नहीं आ रहा. 0, -1 is this point, okay, point line के ऊपर आ रहा है. And 0, 1 ये point नहीं होगा, जबकि 0, -1 होगा ये point. And -1, 0. So the third point will be 0, -1 जो कि यहाँ आएगा. और last point है -1, 0 जो कि लाइन के ऊपर लाई कर रहा है. So our right answer will be option A. The standard form of this quadratic equation. So quadratic equation की standard form मालूम करते हैं. तो यहाँ 2 का LCM ले लेते हैं. तो ये बन जाएगा 3 + 2x square divided by 2 is equal to 2x. So 3 + 2x square is equal to 4x, and 2x square minus 4x plus 3 will be equals to 0. So option D becomes the right answer. Then we have question number 24. 4 times a number is squared. 4 times a number is squared. So let's number will be x. 4 times a number will be 4x. And 4 times the number squared will be 4x squared. The result will be half of 1 less than that number. Half of 1 less that number means x minus 1 over 2. The given statement can be written in the mathematical form will be 16x square is equal to half of the number less than 1. So option D will be the right answer. The solution set of this equation. So let's find out the value of x. A square x square minus a square will be 0. And a square x square is equal to a square. So we will get x square is equal to 1. By taking square root on both sides, we will get x is equals to plus minus 1. So option B is the right answer. What should be added to make this expression x square plus 3x as a perfect square? So perfect square बनाते हैं इसे. First term is whole square plus 3 into x. So here we can multiply by 2 and divide by 2 so that we can make 2ab. So next step would be इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं. 2 ये हमारे पास फॉर्मूले में आ जाएगा. 2 ये x हमारे पास a की जगह आ जाएगा एंड 3/2 हो जाएगा इन प्लेस ऑफ b. तो ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म हो गया. दैट मीन्स अगर हम यहाँ ऐड करें एक टर्म दैट इज 3/2 होल स्क्वायर, so this will become the perfect square. So correct answer will be 9/4. Option C is the right answer. The midpoint of the line segment joining this and this is equals to mn. Find the value of n square. So 2 points है हमारे पास. This is point A and this is point B. इन दोनों points का जो midpoint है, let's say it is m और f के coordinates हैं m, n. Value of A is 2 minus 2 and value of B is -2 -2. n के coordinates हमें मालूम करने, तो coordinates of n will be equals to -2 divided by 2.
So minus 4 divided by 2 will become minus 2. So the value of n is minus 2. So value of n square will be equals to 4. The correct answer will be option C. The distance between these two points 0, 2 and 0b at minus b0. So 0 minus b whole square plus b minus 0 whole square. So in this way we will get b square plus b square, or we can write as 2b square or square root 2b. So the right answer will become option C. The given triangle tangent phi is equal to, we know that tangent ratio is equal to perpendicular over base. So the perpendicular of phi is C and the base of phi is B. So C over B will be the right answer, option D. In the given diagram, the length of minor arc AB, we have to find the length of arc L equals to r theta. So the r is 9 and the theta in radian is 0.5. So the arc length will become 4.5 meters. Option B becomes the right answer. On simplification of sec square theta minus 1 into cot theta, we know that 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. So tan square theta will become sec square theta minus 1. तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर देते हैं tan square theta multiplied by cot theta. We know that tan and cot are reciprocal, so tan square theta multiplied by 1 over tan theta. Tan and tan will be cancelled out, so we will get only tan theta. So the correct answer will be option B. The value of cosec square 45. So cosec square, value of cosec 45 is root 2 and cosec 45 is root 2. So अगर हम squaring कर दें both sides, so we will get cosec square 45 degree is equal to 2. So option A will be the right answer. In the given diagram, the length of AC. So as we can see, this is the hypotenuse of this triangle. So hypotenuse will be equals to perpendicular square plus base square. Calculate करते हैं इस expression को 19.5 square plus 21.5 square, value will be 29.06. So the correct answer will be option C. In a sector, if the ratio of arc length to the radius is 3:5, so this 3:5 is the ratio of arc length to the radius, means L ratio R is equals to 3:5, or we can say that L upon R is equal to 3/5. We have to find the central angle, so we know that L is equals to R theta. Theta will be equals to L over R. So L over R is 3.5, 3 over 5. So 3 divided by 5 is 0.06 radians. So the answer will be option B. For value of a 45, what will be the value of cos A plus sin A whole square? So sin 45 plus cos 45 whole square. Sin 45 is 1 over root 2 and cos 45 is 1 over root 2. So 2 over root 2 whole square. So this will become 4 over 2 equals to 2. So the correct answer is option B. The tangent
of an angle is negative. So tangent is negative in which quadrant? We know that tangent theta is equal to y over x. So in quadrants, this is positive x, this is negative x, if this is positive y and this is negative y. So in first quadrant, all the ratios are positive. In second quadrant, y plus and x minus, this means tangent will be negative. And in fourth quadrant, tangent will be negative. So answer is 2 and 4. Second quadrant and fourth quadrant. So 1 and 3 will be the right answer. On simplification of this expression, 2 sec theta minus 2 tan square theta. So we know that sec square theta itself is equal to 1 plus tan square theta. तो 2 कॉमन ले लेते हैं और सेक स्क्वायर की जगह पुट कर देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा. फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें सो वी गेट 2 एज इट इज 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा. लेट्स मेक करेक्शन. हमने 2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ हमारे पास 2 नहीं आएगा. सेक स्क्वायर की जगह कर दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर एंड दिस 10 स्क्वायर विल रिमेन सेम. अगर हम इसे कैंसिल कर देते हैं तो वी गेट स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2. So the correct answer will be option C. In the given triangle, if DE is equal to 2 times FE, what will be the length of DF? DF की हमें लेंथ मालूम करनी है. DE की जो लेंथ है वो FE के 2 टाइम है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाइथागोरस थ्योरम का एक्सप्रेशन फॉर्म कर लेते हैं दैट PF square is equal to PE square plus FE square. तो DE की जगह प्लेस कर देते हैं हम EF. तो DF square will be equals to 2EF square plus EF square. So 4EF square plus EF square equals to DF square. So option D will be the right answer. We have got 2 chords that are K, L and Mn in the given circle, and K and Mn are at the distance of 4 and 3. As we can see these chords, the distance from the center are not same. This means these 2 chords are not equal. The chord that is near to the circle is greater while the chord that is away from the center is smaller. So if Kn is equal to 7, that is far from the center of the circle, so the chord Mn will be greater than 7 because the distance of this chord from the center is less. So the correct answer will be option B. Then we have a diagram in which we have to solve the equation 40 and 41. First of all, we have to find the value of RSP from this diagram. Let's see what is RSP. RSP is this angle. So as we can see, SR is the diameter and diameter की जो opposite angle है, it is always equal to 90 degree. So अगर हमें x निकालना है तो x निकालने के लिए we get the triangle SPR. इस ट्राइंगल के मुताबिक एंगल एस इज x, P इज 90 एंड R इज 35. तो अगर हम 180 में से रिमेनिंग 2 एंगल्स को माइनस कर देते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 55. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स SQP. SQP. So this is the SQP angle. इसका हमें 2 times मालूम करना है. So as we can see, these 2 angles are the angles in the same segment formed by the chord SP.
जब भी किसी सर्कल के अंदर किसी कॉर्ड की एंड पॉइंट के साथ दो सेम एंगल फॉर्म होते हैं इन द सेगमेंट, दीज आर ऑलवेज इक्वल, नोन एज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. So this angle is 35. 2 times this angle will be equals to 70. Option A is the right answer. Let's see question number 42. In the diagram, AB is the center of the circle with radii 4 and 5. So these two circles, the radius BF is 5 and the radius of the circle is 4. If the length of CD is 3, length of CD हम ले लेते हैं 3, we have to find the value of EF. E से लेकर F तक complete length हमें मालूम करनी है. So as we can see कि A से लेकर E तक, this is the radius 4 and A से D तक will also be a radius that is 4. तो अगर C से D तक 3 है, so A से C तक equal होगा 1A. Similarly, B से F तक 5 है, तो B से C तक भी 5 होगा because these two are radius. If this is 3, so DB will be equals to 2. तो फाइनली ऐड कर दें अगर हम सारी लेंथ को, E से A तक 3, A से C तक 1, C से D तक 3, D से B तक 2 एंड B से F तक 5. तो अगर हम ऐड करें तो 4 + 1 5, 5 + 3 8, +2 10, +5 15. So 15 is the right answer. In the given diagram, AB and CD, AB and AD are tangents. So अगर ये दोनों tangents है, that means के radial segment के साथ जो angle है वो 90 form होगा. B and D are the point, F4 is the center, then which of the option is true? OB equals to OF. OB, OF are equal because these two are radius. AO equals to AD, AO and AD is wrong because 90 के opposite side AO है जो कि largest होगी, AD के बराबर नहीं होगी. AD equals to AB. AD और AB are two tangents and two tangents of a chord are always equal. So 1 and 3 are correct. Option C will be the right answer. Next, we have considered the circle with center O, which of the following statement is are correct. तो यहाँ हमारे पास दो diameters मौजूद है. OP equals to OR, OP, OR. These two are the radius. Obviously, they will be equal. And OQ is also radius. तो यहाँ कहा जा रहा है कि equal नहीं है. Statement हो गई गलत. OP is equals to OQ. OP and OQ are radius, they are equal, and condition 3 is also equal. This means 2 and 3 conditions. 2 and 3. We have got in option C. So the correct answer is option C. Now see the last question of this model paper 45. In the given figure, QoS is 70 degree and we have to find the value of X. One more thing that PR and QS, these two are the chords that are equal. दोनों chords बराबर है, angle opposite to them will also be same. तो यहाँ जो angle form हो रहा है वो भी 70 degree के बराबर होगा. And PQ is a straight line. That means 70 plus 70 plus X will be equals to 180 degree. So X will be equals to 180 minus 140, that is 40 degrees. So the value of X in this question 45 is option B.